telling you people. Last time I told you that most of the time the people are saying ki the principal is coming to the office having a cup of tea or coffee, sitting in the AC, and then go back at 3 o'clock. Cool. अच्छी job है. But they don't know. अपराजिता जी से पूछिए, इधर गरिमा जी हैं, यहाँ से इनसे पूछिए, उधर वो मिस्त्री साहब हैं, उनसे पूछिए, इधर गणेश जी भी हैं, यहाँ पे पूछिए. मैं बताऊं आपको कि मैं 18 साल प्रिंसिपल रहा हूं. एसी में भी बैठता था, कॉफी भी पीता था. बट यू नो कि एवरी टाइम आप मेरे ख्याल से 24 में से अगर 6 घंटे की नींद आप निकाल दें और 2 घंटे अपने डेली कोर्स में निकाल दें, सो आउट ऑफ 24 you deduct 8 hours, 16 hours you are almost, you are on task. And that means task means nothing like that कि you are doing everything yourself. You are maintaining a team. Am I right or not? So the leadership of a Yes, sir. principal is involving a number of decisions. That is academic planning, number one. I will not be explaining each one of them separately. Management at local level, that is staff, students, parents, the vicinal community, everything you have to control. Everything you are controlling. Then next thing is management at local level. That is management at local level, not only three things, that is staff, students, parents, and community. In and out correspondence. Whatsoever the letter come to the school, first it has to be opened by the principal, seen by the principal, और फिर उसके ऊपर मार्क किया जाता है to the HOD science department, to arts department, to accounts officer, something like that. You have to keep on marking. Tell me if I am wrong at any moment. I don't know whether we are visible to each other or not. Yeah. The next thing is core responsibility. Core responsibility mein, if the school starts at 7 o'clock, the principal has to be there at 6 o'clock. If the school is at 8 o'clock, the principal has to be there at 7 o'clock. That means first thing is that he has to take a round of the empty school, the vacant school without anybody over there, only group D, sweeping the classrooms, dusting the desk, chairs, tables, your office, accounts office, classrooms, laboratories. Cleanliness you have to check. Then safety and security. Then different audits are also there, which is core responsibility, which is the core responsibility of the principal. Then admissions, promotion policies, awareness of community needs, everything a principal has to take care of. Then local administration is there, recruitment, staffing, interviewing, induction, capacity building. Just like I believe so that most of you people are principal. Aparajita is principal, Garimaji is principal, Ganeshji is principal, and there are two more also. I will then name them also. Dr. Raj Sekharan has been principal for many years, but now probably she has taken up her own things of interest. Job mein man nahi lagta. Then Mrs. Surekha Mistry, she is also a principal. So more or less, everybody, each one of us was and will be principal. ठीक तो चलता रहेगा. Correspondence with staff, student. अगर कोई बच्चा फीस नहीं लेके आता है, then what happens is कि the accountant runs to मिस्त्री मैम कि वो फीस नहीं लेके आ रहा बच्चा. भाई उसको रिमाइंडर दो कि मैडम 3 रिमाइंडर दे चुका हूँ, अरे एक और दे दो. ठीक है मैडम, वो 2 दिन बाद 2 घंटे बाद फिर आ जाएगा. मैडम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर दिया. Now over here the importance lies with the
what you call the importance lies with the correspondence with the parents of the principal, the language you use. It cannot be like that ki if you don't bring the fees, your child will be thrown out of the school. Because as per the Supreme Court order, it will be corporal punishment and that will be dangerous. Then correspondence with government departments. In Delhi area, I tell you, I have seen 90% of the people, the principals involved only in that what you call RTI. Every time, every day, there are 4 5 letters from the government department and they have to keep on answering. हमारे टाइम में ये आरटीआई शुरू हुई थी, प्रॉब्लम हमें उस समय थी थोड़ी सी, अभी ज्यादा है. 4 5 लेटर्स डेली बेसिस पे यू हैव टू आंसर एंड यू कैन नॉट से नो, यू हैव टू आंसर देम. देन सीबीएसई के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस, लोकल बॉडीज के साथ, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल कॉर्पोरेटर्स, रिसोर्सेज, एवरीथिंग. And then there are secondary committees, responsibilities. We will not discuss a little bit more. We move ahead. That is what different type of things a principal has to control. See over there, decentralization of leadership. Say for example, academic. For admissions, I will make an admission committee. For academics, for example, say setup of say selection of books. So book selection committee has to be there. लेकिन उसको भी guidance आप ही की चाहिए, because you cannot rely upon them कि you select on your own and let me know about that. That you cannot. Certainly you have to give them the guidelines as to on what basis they have to select the books. Then condemnation committee. ऐसा नहीं है कि एक बल्ब फ्यूज हो गया, आपने उठाया, उसको फेंक दिया, दूसरा लगा दो. मैनेजमेंट एंड ट्रस्टी. ट्रस्टी इज ए सॉर्ट ऑफ ड्रैकुला. मेरे टाइम में भी होता था, आपके टाइम में भी होगा 100%. कि जी पिछली बार हमने 20 बल्ब मंगाए थे, क्या हुआ उनका? कि सर वो फ्यूज हो गए, फेंक दिए. आपने कहा फेंक दिए, एंड सर्टेनली यू आर इन ट्रबल, बिकॉज यू हैव टू अकाउंट फॉर एवरीथिंग. डेस्क, चेयर, एनीथिंग, ग्लास इक्विपमेंट्स इन द लेबोरेटरीज, जो भी चीज अगर ब्रेकेज भी है तो यू हैव टू कीप इट वेरी सेफ. unless and until there is a condemnation committee, they have to be classified into 3 groups. Like pehla, which is to be destroyed. Number 2, which can be sold out. And number 3, which can be repaired and reutilized. तो कंडेमनेशन कमेटी का भी काम, वो आएंगे गरिमा जी के पास, आएंगे मिस्त्री जी के पास कि मैडम हमारी कमेटी अभी फरवरी का महीना हो गया है, 31 मार्च को हमारा ऑडिट होने हैं, व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस. नाउ प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 बल्ब खरीदने हैं तो जाओ पड़ोसी की दुकान से ले आओ. नो, ट्रस्टी विल बी imposing upon you. Even you have to be very much cautious. You don't have to be afraid of anybody कि मेरे को जवाब देना है. जवाब तो अपने आप को देना है ना, कि how do I procure? Get the quotations from 3 people, 5 people. Fine. What is the rate? What discount you will be providing? What is the guarantee? Duration of the guarantee or warranty? And so on and so forth. So इस तरीके के ये जो decentralization मैंने बताया है, when I was working in St. Paul's, Darjeeling, over there was nobody to tell us how to do what to do. The only thing was left to us is you have to take care, authoritative type. That is emotional attachment of the staff with the mission of the school. I was in charge of Industrial Chemistry Club, Photography Club, and Audiovisual Club. 3 responsibilities together. कैसे करूंगा मैं अकेले? So I used to make team from the students. उन स्टूडेंट्स के ऊपर एक एक टीचर रख दिया. चाहे प्राइमरी का साइंस टीचर होगा तो वो करेगा. They have to do. And then you go for that. Examination के लिए, क्वेश्चन पेपर सेटिंग के लिए,
बैक कैलकुलेशन करके हम निकालते थे कि रिजल्ट किस दिन निकलना है, आपके सिग्नेचर्स के लिए रिपोर्ट कार्ड्स किस दिन आ जानी चाहिए, उससे पहले ग्रीन शीट्स कब तक तैयार हो जानी चाहिए, ग्रीन शीट से पहले क्लास टीचर का रिजल्ट कैसे हो जाना चाहिए, एंड देन you calculate backwards and come to the conclusion that on the first day when the question paper must be submitted with the head of the departments or the class teacher is this, and from here we move on. So these are different committees you can make. मैं अगर आप कहेंगे तो एक सेशन आज के बाद फिर ले लूंगा संडे को अगर आपके पास हो टाइम या किसी और दिन, so that we can discuss these type of committees. Sure, sir. Right? कैसे बनानी Yes. होती है Sure, sir. कमिटीज एंड व्हाट वी हैव टू डू. जी बिल्कुल सर, ये आजकल बहुत हेल्प देखिए करेगा हम कैरियर लोग को। काउंसलिंग, देखिए एचआर में मेरा एलएनटी में एक हमारा कोलीग ही है, वी वर स्कूलमेट्स, ही वाज टेलिंग कि सर आज 15 लाख इंजीनियर्स एनुअल बेसिस पे टर्न आउट हो रहे हैं कॉलेजेस से, और उसमें से सिर्फ रिक्वायरमेंट 1 लाख की होती है, वो भी टॉप कंपनीज में। अदरवाइज कोई 12,000 कोई 15,000 में अगर किसी दूसरी कंपनी में किसी दूसरे प्रोफेशन ऑक्यूपेशन की कंपनी में लग जाता है, सो दे व्हाट दे डू इज कि उस इंजीनियर को सबसे पहले वो सेल्स टीम में रख लेते हैं कि आप सेल्स मैनेजर बन जाइए एंड स्टार्ट सेलिंग आवर प्रोडक्ट। इंजीनियर की डिग्री 15 और 20 लाख के बीच में आने के बाद अगर आपको 12-15 हजार की नौकरी करनी थी तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है, उससे बदतर कुछ नहीं रहा था, नॉट बेहतर। एनुअल डे है, स्पोर्ट्स डे मनाना है, यू हैव टू प्रिपेयर कमिटीज। नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट अदर थिंग इज द रिस्पांसिबिलिटीज आर देयर फॉर प्रिंसिपल्स। आई डोंट नो, मेरे को पास भी आज टेक्नोलॉजिकल टीम कम है, एंड दैट इज व्हाई आई एम अ लिटिल बिट अफ्रेड ऑफ व्हाट मे हैपन। अभी देखिए ये आगे नहीं चल रहा है, चलिए आगे चलते हैं फिर। अब देखिए स्कूल के अंदर क्या क्या काम होते हैं। बस रनिंग, तो बस की लॉग बुक भी होनी चाहिए, कितना डीजल कंजम्पशन होना चाहिए, कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, जनरेटर के लिए कितना जी डीजल चाहिए, एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्कूल रनिंग, दैट इज लॉग बुक्स टू बी मेंटेन्ड, एंड दीज लॉग बुक्स विल बी केप्ट इन द ऑफिस, जो आप कभी भी चाहें निकालें और देख लें। So these are minimum things which are required in the schools. Now ये दोनों स्लाइड्स में एकेडमिक रिकॉर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स इनकी पावर पॉइंट में आपको भेजूंगा, बिकॉज ईच वन ऑफ देम, एकेडमिक रिकॉर्ड भी अगर आप देखना चाहेंगे ना, अगर उसके बारे में समझना चाहेंगे ना, सो इट विल टेक not less than, I am telling you, not less than 2 days per slide, academic records. Similarly, administrative records. So I will give you the PowerPoint for both of them, and then we will continue with this. Now, that is the team building processes. Set the standards higher for yourself than others set for you. Some ways to build team and team leaders. अब देखिए इसमें कमेटीज आप कैसे बना सकते हैं। टाइम टेबल मेकिंग, similarly substitution, examination committee, book selection committee, classroom observation by peers, then discipline committee, admission committee, safety and security, uniform selection, transport management, event management, a number of things are there. The next one is for ये committees, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक extra lesson ले सकता हूँ आपका, इसके बारे में आपको इसी स्लाइड में इसी प्रेजेंटेशन में मिलेगा, that how do academic committee work. They are charged with the academic planning, academic welfare of the learners, timetable, competitions, awards, book selection, everything. Similarly, examination committee is exam issues, entrance tests, competitive exams, scholarship exams, talent exams, Olympiads,
The examination committee is given the responsibility of all this. Next is enlargement committee means I have to enhance the admission in this school. How do I do that? So for that, again, I have to make committees. And what the committee has to do, इसका ज्ञान आपको भी तो होना चाहिए ना. You must also know what are the basic requirements for the marketing and branding, expansion, public relations आपके कैसे होने चाहिए, enrollment, advertisement, whether your management will be permitting you to spend money 4 lakhs to 5 lakhs per year only on this particular thing. Certainly not. Then welfare committee, welfare of staff and welfare of students. So what are the different things you have to do? You make groups of 5 teachers each. List all the tasks in the classroom, out of the classroom, within the campus, out of the campus, and then delegate them the task, what they exactly have to do. उसके बाद वो कमिटीज बना दीजिए. अगर आप चाहेंगे तो ग्रुप में मेरे को लिख दीजिएगा yes और no. अगर yes लिखेंगे तो उसके साथ day, date और time जरूर लिख दीजिएगा if you want explanation on these things. थोड़ा सा डिस्कशन इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं. Now next thing is क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए. अब देखिए हम लोगों का जनरली एक ट्रेंड आज तक ये रहा है कि एवरी टाइम वी हैव बीन मेकिंग क्लास मॉनिटर्स. अभी वो जमाना चला गया. नाउ द थिंग इज दैट कि एवरी पेरेंट वांट देयर चिल्ड्रन और किड्स फॉर हैविंग 2 things to be provided by the school. Number 1, he starts speaking in English. Tell me, Dr. Jayalakshmi, am I right or not? That my child must speak in English. Yes, sir. No doubt in that. And number 2 is that anyhow you make my child officer. But now make your child officer is not in my hands, but they want it right from the beginning. तो देखिए आउट ऑफ द रूम्स क्यों मॉनिटर, डेस्क मॉनिटर, रिसेस मॉनिटर, हम लोग मॉनिटर कहते थे. अभी हमने इसका कंसेप्ट चेंज करके जो मैंने कर दिया था. When I was last time principal in 2012, I started this concept of utilizing their same persons with officer word, the word officer with their names. Homework officer, pencil officer, hosting officer, light officer, chalk officer, board officer, uniform officer. बताइए अपराजात्य जी, अच्छा लगेगा पेरेंट्स को? बच्चा घर जाके डेफिनेटली सर, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा. बच्चा घर जाते के साथ ही अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, जैसे आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स के पास यहाँ पे एक टैग होता है ना, नाम. जी, वो नाम ना लिख के उसके आप ऊपर आप ऑफिसर लिख दीजिए. ऑफिसर लिख दे. बिल्कुल. होमवर्क ऑफिसर 6th A, जी, चौक ऑफिसर 8th B, यूनिफॉर्म ऑफिसर 9th C, ऐसे करके लिख दीजिए और असेंबली में उनको दे दीजिए. और उनके यहाँ पे जब पहना देंगे तो वो बच्चा, बड़े वालों को तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आई डोंट नो दैट मच, लेकिन प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे घर जाके पहले सीना चौड़ा करके बताएंगे, मम्मी देखो मैं होमवर्क ऑफिसर हूँ अपनी क्लास का. एंड टेल मी व्हाट इम्पैक्ट यू विल बी गिविंग टू द पेरेंट्स. कि अच्छा स्कूल में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग नाउ माय चाइल्ड इज ऑफिसर, व्हिच मींस ऑफिसर लाइक क्वालिटी विल आल्सो बी शोन, will also be imbued, and that is the way you create the teams. हर 15 दिन में वो ऑफिसर बदल जाएगा. आज होमवर्क ऑफिसर है, 15 दिन बाद वो वाटर ऑफिसर बन जाएगा. मींस किसी को प्यास लगी है, पानी पीने के लिए जाना है तो उसकी परमिशन जरूरत है. किसी को वॉशरूम ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा कि मेरे को वॉशरूम के लिए जाना है. And this will give very good impression of
your administration on the parents. 100% मैं बता रहा हूँ आपके admissions बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. Sir, it may Just- create a chaos in the classroom then. What is that? It may create a chaos in the classroom every time for each and for everything. They need to take the permission. Yes, So it may everything. create a chaos in the class. It will not. It will create discipline. अभी क्या होता है मैम कि the teacher is not in the class. The kids start running in the corridor towards the water machine. There is So chaos now. mischievous students can. सीनियर स्टूडेंट्स जो है वो छोटे बच्चे को कान मरोड़ देते हैं, उसको पिटाई कर देंगे. डोंट रन. वो अपनी दादागिरी करते हैं. और ये आज की बात नहीं बता रहा, मैं तो अभी 2012 की बात बता रहा हूँ, 10 साल पहले की बात. What may happen now is unknown, but at least I have seen this thing working in the rural areas very much. मेरा एक प्रोग्राम होता है हाउ टू एनहांस एडमिशन इन योर स्कूल. आपके स्कूल का बजट होता होगा 4 लाख 5 लाख रुपए पर साल का. बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड्स ले हैं, एडवर्टाइजमेंट करने हैं, बस के पीछे लगाने हैं, आगे लगाने हैं. मेरा जो एडमिशन प्रोग्राम है, पूरा सेमिनार करने के बाद that will be taking only 50,000 rupees per year, not per month. I am talking about per year. और वो आपके बच्चे और आपके टीचर्स ही काम करेंगे उसमें. They will be involved and they will put forward your school in front. And there is a beautiful program. आप देखिए ना, एक बार करेंगे तो you all will be invited over there. और अभी कोई क्वेश्चन होगा तो बताइए, because my co-trainer has come from Barmer after nearly 3 weeks spending over there as a career counselor, Dr. Jayalakshmi Rajasekaran. कोई क्वेश्चन हो तो पहले बताइए. Still we have got nearly 4 minutes, 5 minutes. Yes, Surekha ji. Anything more No, you sir. want to know? No, sir. कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कोई डाउट्स? No. डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए प्रोसीजर्स होने चाहिए. प्रोसीजर्स करने के लिए मेरा एक प्रोग्राम अभी चालू होगा, मैंने बताया भी था. आई बिलीव सो ऑन 4th only I told. I will be giving you the link in the group itself. That will be free of cost for you people. Whosoever wants to join can join on 14th and 15th evening 5 p.m. That will be continuous program for 14th, 1 hour, nearly 40 minutes. क्योंकि अभी देखिए ना, 6 बजे तक आपको फिर वो सब्जी काटने के लिए और ये सब करने के लिए जाना पड़ेगा रसोई में. सुरेखा जी तो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं कि सर को कैसे पता चला. No, sir. I have a cook at my home. वो को है, उसको भी तो गाइड करने के लिए तो आप ही की जरूरत है. My mother-in-law is there with her. कुक किसके पास नहीं है? सबके पास है. अपराजिता जी आप भी जाती हैं रसोई में, तो जाना ही चाहिए ना. Yes, sir, बिल्कुल. Your main forte is kitchen. Exactly. All right, I will be inviting Dr. Rajasekaran to address the gathering. Good evening, sir, Sharma ji, Good evening, ma'am. and good evening, dear participants, the most respected principals from different schools. Good evening. And I'm ma'am. Dr. Jayalakshmi Rajasekaran, the former principal of a reputed school in Tamil Nadu, and I am in this field of education for nearly 30 years. And now I am not in the role of the principal. I have just stepped out of that role, and I am conducting programs for teachers. I'm training teachers, and I'm a student counselor. So I do counseling for teachers, I do counseling for parents, I do counseling for students, and also run training programs. And in one way or the other, I am associated with Shamaji, also with Vinora Educational Services. So next, we would like to plan a program on positive discipline. So how to discipline the students? You all know as principals that after this corona nearly for 2 years, do you find it very difficult to control your children in the classroom? Yeah. Yes, that is the difficulty we all teachers, principals,
And everybody feels, even the aunties, those who are in the transport, the school buses, even they feel that they cannot control the students. So how to discipline the children in a positive way? See, there are two ways of disciplining a child. One will create and actually a negative impact on the child's personality. So now we focus only on the positive disciplining. So that is one session I would like to do with for the teachers as well as the principals. Because the teachers also should know they are actually the people, those who are always with the children for at least minimum 6 hours in a day. Then the next topic is actually 21st century skills. Only if you have all these skills, as Shavaji has said, the parents want all the students, all the children, the kids to be well versed in spoken English, and also they want to be like an officer. So when I say it's an officer, it's actually a leadership skill what you are cultivating in a child. The leadership skill is only to dominate others. It doesn't mean for dominating. It's a positive quality where everybody would like to have. So only if a teacher has that skills, the 21st century skill, then only you can train a child to have the 21st century skills. So on behalf of this Vinora Educational Services, myself and Sharmaji will togetherly will be doing this program, the positive disciplining of a child, as well as the 21st century skill development in teachers. And I personally, as a teacher mentor and a dedicated teacher and as a principal, I welcome you all participants to once again join in that particular program, and you will get benefited. So wishing and willing to see you again in those sessions. Thank you. Now, let me know, Mrs. Surekha also is there. Mrs. Aparajita is also there. Both are principal. And then Ganesh ji is there. Garima Dikshit ji also there. Just now, today itself, in the group itself, I will mention this. There will be free of cost program, that is Ace the Classroom Management, on 14th and 15th evening 5 o'clock. So 2 sessions, 2 days. Third time, Tuesday, it will be same 5 p.m. by Dr. Raj Sekharan on behavior, positive behavior. It means imbuing for positive behavior in the, or controlling the behavior management in the students after pandemic, how it can be done. So she will be taking that. And then on next Friday, we will be conducting 21st century skills that are not required only for you people, me. Even I am also learning these days. Even at the age of 60 years, I am learning. Because without learning, I will not progress. Somebody will come and replace. आप लोग वो इंडियन आइडल देखते हैं? इंडियन आइडल में अभी एक आया था, इस्माइल दरबार इस्माइल या इस्माइल दरबार, समथिंग लाइक दैट. उसने क्या कहा था कि जब मैंने शुरू कैरियर करा था कैरियर, तो वो अयोध्या से एक, आपको याद आया होगा, सिंह करके एक लड़का आया था. उसको गले लगा के उसने बोला था कि जब मैं आपकी उम्र में आया था इस इंडस्ट्री में, एट दैट टाइम आई वाज एट द बॉटम. और उसके बाद ऊपर बढ़ता गया और इतना बढ़ता चला गया कि बादलों को चीर के आसमान तक पहुंच गया. और वहां पर जाकर मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई, नाउ आई एम सुप्रीम, नोबडी कैन टच मी. और वो मेरे नीचे गिरने का टाइम शुरू हुआ था, और आज मैं फिर वहीं पे हूं जहां से मैंने शुरू किया था. Tell me, Mistry ji, these were her words or his words or not? So unless and until we upgrade ourselves on daily basis, upskill ourselves, we will not progress. The session is going to end now, less than a minute. If anybody has to speak anything, fine. And please share your mail IDs. Almost everybody's I have got now. So with those 2 modules of these things, teachers, leadership, and principal students leadership. If anybody has got any question, you can post it in the group. Otherwise, we were sending this
I will be sending these 2 recordings and your certificate of participation tomorrow morning before 11 o'clock. You must check your inboxes. Fine then. Thank you, Dr. Excuse me, Sethi. sir. Thank Yes, you.